Okay, let's start. Just a moment. Okay, the voice is my voice clear? Yes, sir. Okay, let's start. Good afternoon, everyone. So today we are going to start with the introduction to Google SketchUp. So first, I would like to tell you few things before starting this course. Yes, who is there? Who has raised the hand? Now, what is Google SketchUp? Google SketchUp is basically 3D modeling or 3D design software. Uh, Next, why SketchUp? The SketchUp is easy to understand, user friendly, and truly makes 3D modeling for everyone because anyone who is not having the civil engineering background or architectural background and interested in 3D modeling, they can go for Google SketchUp because it is very user friendly. Other softwares are a bit difficult and or need more practice. Then who should learn SketchUp? The architects and engineers, most probably civil engineer and mechanical engineer, should learn this software or they learn this software. Then game developers, then interior designers, furniture designer, landscapers. These people should learn Google SketchUp because this is very versatile application, and this application gives you freedom to develop your thoughts in or design your thoughts in a proper manner. Next, I will show you a small video. The video is already seen by the interior design internship students, but then also to motivate other students for Google SketchUp, I will show you a video later on. Software details. This software is available for Windows and Mac also. Then versions available currently, that is Google SketchUp Pro 2017 to 2021, that is the latest one. And one more update recently received from SketchUp 2021. You can download a trial version of 30 days for this work, or for particularly for professional skill, for 5 days program. Then web version is also available, that is for free. Just you have to log in your browser, and whenever you download the Google SketchUp 2021, with that you will be able to download that web version. The web version, the console panel is different, or that the options visibility is different than the normal one. But once you understand the use of basic software, then you will be able to use web version also. The Android version is also available, but that is just to view the drawing, or whenever you are going to present your work to the client, or whenever you want to show your project to anyone else for the suggestion, or for some changes, then only you can use that version. uh, and this Android version is having the VR option also, that virtual reality option. If you are having that क्या बोलते हैं उसका, वीआर का गॉगल आता है ना, या फिर स्पेक्ट्स आता है, वो यूज़ करके आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर एंड सॉरी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट for this Google SketchUp. You may have 64-bit, 2 gigahertz plus speed for the processor. Then RAM, minimum 4 GB RAM should be there. Availability, or the available hard disk space, 700 MB, and graphic card 1 GB. If you are going for the rendering, then 1 GB graphic card is required. Either uh, it will work fine, but if you do the drawing in more detail, that time you will face some issues, because this software is लिटिल बिट स्लो टू हैंडल द पॉलीगॉन्स. मतलब अलग अलग शेप्स, ज़्यादा क्रिटिकल शेप बनाओगे तो उसमें लैग आता है थोड़ा सा, दैट इज़ द इशू. तो उसके लिए तुम्हारा ये अच्छा चाहिए. तो लेट्स सी द शेड्यूल. टुडे वी आर गोइंग टू complete the introduction, then basic setup at the start. I will tell you what is the requirement or what tools you need to understand at the start. Then drawing toolbar, edit toolbar, use of view toolbar, style toolbar, and use of divide. So that we are going to learn today. Then day two, we will see, tomorrow we will see the principal, sorry, day after tomorrow, principal toolbar, make component, make group, tape measurement, dimension, protractor, text, 3D text.
use of layers while drawing, then application of various material, edit material, create material, then actual design of house plan and 3D model, or we will say we'll go for the public building instead of house plan. Then using of shadow toolbar, 3D warehouse, and day 5 we will see the rendering, or at the day 4 we will complete the rendering part, and day 5 we will be having the presentation. Whatever the project or the task given to you, you have to compile that task in a presentation format, in a group of 5 or group of 10. We'll sort it out later, and then you have to present it. So what you are going to learn, the outcome is most important, because without that uh, you will not be interested in doing any work. So this is the uh, house plan or residential 2 bhk flat plan, which we have completed in a 3D model in internship program. You can see the different furnitures at its place. We can provide the different lightings or whatever is required. So these are the images with the rendering. Previous one was the drawing, and these are the rendered images. After finishing and rendering, you will see these type of effects. So here you can see the sunlight is coming from the window. You can see this table is having, this center table is having the reflection of that light, because we have provided the material is called marble or glossy glass. The matte glass is also there and glossy glass is also there. Here you can see we have provided the lights in pop, or we can say false ceiling. Yeah, in this kitchen here you can see the tube lights. So whatever the reflections, absorbance, and whatever the light is present in the drawing is because of these interior lights. Also, there is an option called only exterior and sunlight. I will tell you these things afterwards. Here you can see I have provided one mirror and the basin over here, and this is the kitchen. In kitchen also we have provided the interior lights. So different things you can make, install in your drawing, or you can directly download it from online. Only you have to rescale that part as per your requirement. So next part, this is a small video. This video is called as a walkthrough. A walkthrough is just to represent your drawing टू अ पर्सन, और जिसे भी आपको दिखाना है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वॉक थ्रू. लेट्स सी द वॉक थ्रू. दिस इज द हॉल. Then it will go to another side of the hall. After that, here you can see the top view of the dining room. Then you will be able to see this dining part from another angle. Then another angle for dining room. This is the kitchen. So closer look of the kitchen, how you can provide the different type of furnitures, textures to the material. Now back to its original position. So this is called as a walkthrough. You can also do that, or I will teach you how to prepare a walkthrough in Google SketchUp. The next part is, whenever we have conducted the internship program or Google SketchUp professional skills program for the previous batch, or we can say the batch who is in the third year, from their project they have prepared one drawing which is a rendered one, and again they have prepared a walkthrough of it. I would like to show you, that will definitely going to motivate you for the work. Let's see. The video quality is low because it is a WhatsApp video, but see the way they have added the components, texture, reflections, colors.
So this is the outer view. You can see you can design the house like this in a Google SketchUp, but file will be raw. Just you have to provide the rendering to this. So this is all about the video and the presentation. Let's start with the Google SketchUp. ओके, इतना समझ में आया क्या है गूगल स्केचअप क्या नहीं है? Yes, sir. ओके, इंटरेस्ट जो लोग नहीं सीखा है, जिनको कुछ पता नहीं है इसमें, जस्ट एंड डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. इसमें अब ये देखने के बाद एटलीस्ट यू गाइज आर फीलिंग समथिंग न्यू, यू गाइज आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस प्रोग्राम. Yes, Yes, sir. sir. Yes, पहले sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. so just I would like to encourage you guys, I would like to show you one video how a person has designed गेम, जो गेम होता है, गेम का पूरा सेटअप या फिर पूरा सिटी, that is designed by using Google SketchUp, and then it will be animated or rendered by using different softwares. बाकी लोगों ने ये देखा हुआ है, so they will be least interested in this, but they will also get some new things out of this program. ऑडियो सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? No, No. sir. हाँ, just a moment, 1 minute. हाँ सर सुनाई दे रहा है. Okay. My role as art director on Uncharted 2 was it's like being an architect for a virtual world. And you've got lots of people doing different things, so as an architect, you just sort of make sure we're all sort of moving in the same direction. See, the previous file, if you have seen this is the Google SketchUp file or Google SketchUp drawing. Whenever you want to add different things, if you want to add some highlights, you want to add animation, you have to take the help of different other application. That also I am going to teach you, but I will just show you the basic application, and that is also free for 30 days, or we can say 30 days trial version. See, this is the animated file. I think some of the challenges of working on Uncharted 2 are just keeping that bar raised. It's pretty easy to just, quickly push something out, but it really wasn't an option on Uncharted. Concept art is sort of the first front. First thing we start doing is quickly sketching, just rough ideas, shapes, tone, and then as soon as we can, we start going into the 3D process. And for me, that's where SketchUp is completely useful because it's so fast. So right away, I can start making. See, this is also the Google SketchUp file. Then how they have real put design that file choices into that this type of actually view. we can implement them in the game because I'm really thinking about how tall is the ceiling, how many pillars are there, how thick are those See, pillars, can you hide Then behind is those also pillars? SketchUp file. Instead of just drawing, See the by turnover. actually making design choices in the third dimension, you can help the See. process along more accurately and faster and keep it more flexible because you're working in 3D, and SketchUp is just my personal choice just because it's so fast and easy and quick. We used it a lot in the Shambhala level, which is the big ending of the game, the big lost city of Shangri-La. So yeah, what was super useful about blocking that stuff inside SketchUp for Shambhala was that we had to come up with a modular system. You've got to have this immense city, but it also has to render at 30 frames a second. So you have to have a lot of instances, which is repeatable geometry. So came up with kind of like a simple modular system that you could have half a dozen pieces, but if you arranged them in the right way, you wouldn't notice that it was so few pieces. You just think, oh, look at this amazing city. So being able to work out that shape language inside SketchUp was super useful. I definitely see concept art going more three-dimensional. Drawings only get you so far. You can do a really sexy drawing, but the real design comes in working out the design in the third dimension, whether it's films or games. And so, again, SketchUp, fast, easy, quick. It's a great, great design tool. Okay.
So this is the video I wanted to show you. Definitely after watching this video, you guys are interested in learning the SketchUp. So this way, the gamers or game developers can use the SketchUp. Civil engineers also use the SketchUp that we are going to learn from today itself. Uh, I will share my screen. See, so whenever you install the software, you will see these four icons on your screen. uh, that is Google SketchUp Pro. This file we are going to, is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So whenever you install the software, the file will look like this, or the application icon will look like this. Then builder, that style builder option is there, that we are not going to use. Or if some time is remaining after fourth day, then I will try to explain you this also. Then there is a web version. The previously I told you about this. If you face some issues in downloading the Google SketchUp, you can take the help of web version also. And then another file is there, or icon is there, that is called as a layout 2021. If you guys have learned the AutoCAD, the same, the layout option is just for making or converting your drawing into 2D. So if you complete your drawing in Google SketchUp, you can convert the 3D model into 2D drawing, or we can say plan and elevation, very easily. This can be in future, this can be the replacement to the AutoCAD layout, but nobody is thinking about it. Let's see what happens whenever you run the application. I will also teach you how to download that, because you guys will be requiring that software in your PC. If some people hardware is not up to mark, or we can say the lower version, those who are having the lower version, that is 32-bit or old PCs, they can go for Google SketchUp 2016. I will also tell you how to download that. Now whenever you double click on the icon, you run that application. That time it will first ask you to select the template. So these are different templates. If you see, simple inches, simple meter, then architectural inches, millimeter, centimeter, and meters. So first we'll select the simple meter option, and also it will show you the files previously you are worked on, or you can open the files from here. I will select the simple meter. Now uh, this is this one is my rendering application, Render Plus. Then this is the view which is of my use, or which I have created as per my requirement. Now whenever you start the software will basically look like this. Just a moment. So at the start, whenever you run the software, you will be able to see these things only. So here you can see at the top of this, that is called as a title bar. Then you are having the menu bar, file, edit, view. This is called as a menu bar. And below that, you are having different tool options. So that is called as the toolbar. So this is the basic toolbar you guys are having. And then there is option called as the default tray. So in default tray, you will, in instructor, you will be getting some guidelines how to use Google SketchUp. Please mute yourself. Those who are having mics on, please mute yourself. Okay. So you can get the help from instructor also. Now sometimes it may happen that if you close the default tray, how you will be able to switch that on again? So go to the Windows, then go to default tray and show tray. So everything, whatever you are drawing in your drawing, or some uh, things you are requiring, you will get the help from default tray. So I'm currently closing that option.
Now you can see this is your working area, or you can see uh, three different axes, that is the red axis, green axis, and blue axis. So we can consider this as x axis, y axis, and z axis. It is up to you. Now there is a model for the reference. We are going just click on this. Most important thing is to understand right click or left click. So left click on this and delete it, simply delete it, press the delete button. Now uh, before starting, the most thing is important to know that this orbit tool here, you can see this is called as the orbit tool. Orbit tool is used to change the camera angle or change the view, camera view. So here I can select this orbit tool, press and hold my left click and rotate it like this, so it will change the camera angle. See, uh, you can see any view by moving your mouse like this. Another way of doing it is you can press and hold your माउस स्क्रॉलर, जो बीच में बटन होता है ना जूम इन एंड जूम आउट के लिए, दैट इज कॉल्ड एज माउस स्क्रॉलर, उसको प्रेस करके रखो एंड देन मूव इट, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. Then to zoom in and zoom out, what you can do, you can use the mouse scroller, or better way, uh, this is the most easiest option I think. If you want to use any other option, then you can select this and you can zoom in. See, double click on this, or now currently there is no drawing present, so it is difficult to zoom in. Or whenever you want to come back to the original position, you can use this option, zoom extends. So, so now suppose I zoom in, then I want to come back, then I will press this. So this is called as orbit. Then next is zoom, then this zoom extends, and next is pan. These tools are going to help you while drawing, because this is the basic one. Select the pan. The use of pan is just press and hold. Select the pan tool, press and hold the left click of the mouse, and just move the screen as per your requirement, horizontally or vertically. You can check. You can move the screen horizontally and vertically. Now you can also enable the same option by pressing the shift button. Press and hold this shift button, uh, keyboard shift button and mouse scroller, then automatically it will go into pan option. So just to enable that, you have to press and hold shift and mouse scroller button, then only it will be in working. Now currently I am in command, that is pan command. Now I want to come out of any command, so you can press escape. So if you are drawing, then you will come out of that drawing, but you will be remaining in same command. If you want to come out of this, or you want to come out of any command, that time you have to select the selection tool. This arrow is called as the selection tool. Now see, I am using this pencil tool or line tool. If I want to come out of this, I want to end the drawing, I will press escape, and then I will come to this selection tool. Then I will select the lines, or better I will select any other option. This is the rectangle tool suppose. So this is the use of selection tool, orbit tool, pan tool, and zoom. uh, Now is there any difficulties, those who are new, is there any difficulties you guys feel or something? No, sir. Okay, No, sir. okay, let's go ahead. Direct second year students, you guys feel anything? No, sir. Okay, let's go ahead. Now at the start, just for the confirmation, go to the windows, go to the model info. In the model info, just you need to check the units. In units, initially we have selected the template, that is meter. Just again, to have a check of it, you can go to this windows,
then model info and units, and check your unit. If you want to change this, you can change it to millimeter and close this, but I want to keep it in the meters, so it is okay. Okay. Now most important thing, whenever you are working in the Google SketchUp, here we are having the powerful tool that is called as a measurement bar. Whatever the command you are using or whatever things you are drawing, it will be reflected. The dimensions will get reflected in this dimension or toolbar. This is the length. See, if I'm using this arc tool, length, and then it will ask me to provide the radius. So it is most important to uh, have your eye on this measurement bar. Now you can delete this drawing in a different way. You can simply use the erase tool, or you can select the selection tool, press and hold mouse left click, select this and delete it. So these are the basic settings which are required to start. Now most important thing at the start, just go to the tools, sorry, view, go to the view, then there is an option called toolbar. From toolbar you will get the list of different toolbars. At the initial level you are having one toolbar on, that is called as getting started. Just what you need to do, select the large tool set and close. So this is the set of toolbars, different toolbars. Here you can see this is called as the principal toolbar, this one is the drawing toolbar, this one is the edit toolbar, this is the construction toolbar. So it is the set of all toolbar which will give you feasibility while working. So we are going to learn these toolbars one by one, what is the use of particular thing. So for today we will practice with, or we will start with this drawing toolbar and edit toolbar, because mostly we use these toolbars while drawing. So these are the basic settings required. Another toolbars are also there. I just told you how to enable any toolbar or disable any toolbar. Go to the views, then toolbars, and in that you are having this checkbox. So select any checkbox, that toolbar will be uh, visible to you here. Or we can say, suppose I want draw toolbar separately. This is the drawing toolbar, you can see this drawing toolbar and edit toolbar. Now close. So this is your toolbar option. Same thing you can do it from here. Right click on this, you can come to this line and right click on this, and then close this option, and then again right click on this, and then enable these options. Also, if you want to arrange it in a proper manner, what you can do, simply come here, you will see the small dots over here, then just move these dots like this. So it is not getting fixed properly. Okay, so this way you can complete the basic settings required to start the application. Now I will close this software for a moment, and then I will start it again. Okay, select the meter option. Okay, let's minimize this, and I would like to show you this web version. So I'm having the icon of the web version separately. Okay, for that you have to log in. I will tell you that tomorrow, because I have already logged in from different email IDs. Okay, so once you start the application, uh, the console panel will look like this as per you have set earlier. So I will
remove out the unwanted things, that is I render NXT is not required now. Okay, so let's start. So first thing first, we have set our units. This is our 0 point. First tool in drawing toolbar is line tool, or we can say the pencil tool. So first we'll prepare one rectangle or one square by using the line tool. For that, select this line tool, mark first point on the screen and drag the cursor like this. So I want a line of 5 meters, suppose 5, enter. So this is my line of 5 meter parallel to red axis. How I can guess the line is parallel to red axis? Whenever you draw the line will be appearing in red color. That is the indication your line is perfectly parallel to red axis or straight line. Now suppose I want to draw a line parallel to y axis or straight line along the y axis, then I will drag my cursor or mouse like this, and then uh, match the line till the green color appears. Now 5, enter. Then again I will drag the line on red axis and 5, enter. Just you have to put the desired dimension by using your uh, keyboard. 5, enter. See, the main difference in Google SketchUp and other applications or 2D drawing applications here, before converting particular thing or particular plane into 3D, you have to convert that drawing into the planes. Now you can see if I remove this line, this last line, so you will be able to see this. These are just lines. But when I join this, it will get convert into a plane, which I can select easily and delete also. If you press the delete button, now I have only uh, the lines with me. But if I join this again, so you can see what I have done. I have converted that lines into planes again. So this is the difference between mm, other applications and Google SketchUp. Now when again I will select the line command, so we'll see how to use this line command in different way. Now I want to convert this square into cube. So I will draw a line on vertical axis or blue axis by dragging this line like this. So 5, enter. Again I will drag this on green axis, 5, enter. Sometimes it will look uh, differently, or we can say it is not as per our requirement, but believe me, it is perfect square. If you are putting the dimensions correctly, it is a perfect square. When I close this, the two planes will get closed. See, this is the cube I have completed. So by using line command also you can draw different things, but same thing we can do by using this rectangle option. So select the rectangle tool, specify first point, and then drag a cursor on the horizontal plane and draw, place or mark second point like this. So this is the rectangle of unknown dimension. I don't know the dimensions of it, but if I want to make a square of known dimension, then mark the first point, leave the cursor as it is anywhere on the screen, and just type the dimensions 5 comma 5, enter. Just observe this dimension bar, 5 comma 5, enter. Understood? Any difficulties? सर अगर बोलो. ये क्यूब जैसे आपने बनाया वो पूरा प्लेन में कन्वर्ट हो गया, अगर मुझे वो प्लेन में कन्वर्ट नहीं करवाना है, जस्ट लाइंस चाहिए, हाँ, तो कर सकते हैं ना. देखो अभी इसको तुम लोग सिलेक्ट करो, और भी ऑप्शंस है. खाली मैं अभी क्या है बेसिक लेवल बता रहा हूँ तुमको, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसमें. सी, अभी क्या है, प्लेन नहीं है, खाली क्या है, लाइंस बचा है. इसमें क्या है, सर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कुछ किया? नहीं कुछ नहीं, मैंने क्या किया, सिलेक्ट करना है जो प्लेन तुमको हटाना है ना. देखो ये किया, सिलेक्ट किया ये प्लेन को. वेन एवर यू सिलेक्ट एनी प्लेन,
the selected plane will appear in dotted form. अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो डॉट 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 डॉट्स दिख रहा है. सिलेक्ट करो और डिलीट करो, सिलेक्ट करो डिलीट करो, सिलेक्ट करो डिलीट करो, सिलेक्ट करो डिलीट. डिलीट बटन, तुम्हारे कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाना है. दैट्स इट. अंडरस्टूड? हेलो. Yes, हेलो. sir. ओके. नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप रिप्लाई दो तो वी कैन गो अहेड. ठीक है. नाउ सर अनदर. वो हाँ नेटवर्क इशू बोलो. हो गया था. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. अभी और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टूल है विच वी यूज, आई कैन से 80 to 90% ऑफ टाइम्स, दैट इज पुश पुल टूल. और इफ यू गाइज हैव learned that AutoCAD 3D, that is called as extrude. So first select the push pull tool, take the cursor on this plane and just click on it and raise the height of this by uh, simply clicking or making a second click, or you can also put the perfect dimensions, that is 5, enter. So this is the cube of 5 by 5 by 5 and this is also a cube of 5 by 5 by 5. Also I can do this by another method, control Z, select this and take the reference of this plane. So it will be having the same height, 5 by 5 by 5. To check that, I can use this dimension bar. So mark first point and mark second point. You can see these are the dimensions. And this one also, what I have done earlier, I have select this push pull tool, select this plane by simply clicking on it and then take the reference of this plane. So इसका height और उसका height match हो जाएगा. समझ गए? So यस सर. हाँ, ये दो मेथड था. So this way you can draw the different things by using the line command. ये एक पार्ट था. Now we'll go further. There is one more command called as a free hand. इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ये रैंडमली ऐसे जैसे हम लोग फ्री हैंड स्केच बनाते हैं वैसे यू कैन ड्रॉ एनीथिंग. मतलब रिजिड रिजिड ड्राइंग बनाना हो कुछ तुमको, कोई ऐसा इरेगुलर शेप बनाना है, so you can use that. And also you can convert that irregular shape into 3D. लो. Okay. So converting 3D object from 2D drawing is very easy by using Google SketchUp as compared to other softwares. Now let's go to the rectangle tool. रेक्टेंगल में सिंपली क्या है, हमको एक पॉइंट प्लेस करना है, दूसरे पॉइंट को मार्क करना है, दैट इज द रेक्टेंगल. देन if you want to draw a rectangle of perfect dimensions, mark first point, drag the cursor like this. सेकंड क्लिक नहीं करना है, खाली ऐसे ड्रैग करके रखना है. then suppose I want to draw a rectangle of 7 meter comma 5 meter. So just observe the dimension in measurement bar, that dimensions are 7 by 5 and simply press enter button. So this is the rectangle of 7 by 5. If you want to measure the dimensions, you can measure the dimensions like this, 7 and this 5. Understood? Yes, sir. Okay. टू मेजर द डायमेंशन, अभी डायमेंशंस यहाँ पे अलग अलग वे से हम लोग मेजर कर सकते हैं. देर आर 3 tools we can use to measure the dimensions. First, if you want to mark the dimensions for your drawing or the drawing, it is mandatory for you to show the dimensions in your drawing, then use this dimension tool. So dimension tool कैसे आप use करोगे, just select the first point, second point and drag the cursor on whichever axis you want to place that dimension. So currently what I am doing, I am dragging this on y axis because I want to place it in on horizontal plane, not on a vertical plane. But in second case, I will select this, I will drag it on a blue axis because I want to place it on vertical plane. So this way you can use the dimension tool. So second option is called as a tape measurement tool. So you can select the tape measurement tool, select the first point and select second point.
you will be able to see the dimensions in this dimension toolbar. Just observe it again, first point and then just second point. No need to मेक अ सेकंड क्लिक, बिकॉज यहाँ पे खाली ड्रैग करना है आपको. पहला क्लिक करो, first click and just drag, so you will be able to see the dimensions over here. And next method is select this pencil tool, or we can say line tool, mark first point and drag it on the second point. Same thing will happen, you will be able to observe the dimensions over here. So these are the three ways how we can measure the dimensions of particular line or particular uh, the sides of a rectangle or anything. So let's go further. So once we have completed this rectangle, we will convert this 7 by 12 rectangle in 3D. I will provide the height of 3 meters, because 3 meter is, I can say, a standard dimension for the residential building, or standard height of a residential building. Once we complete this, you can now consider this block as 7 by 5 by 3 meter of room, जिसका वॉल्यूम तुम लोग अगर देखोगे 7 by 5 मीटर का डायमेंशन है और हाइट है 3 मीटर. नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, I will select this rotated rectangle tool. So this is also interesting one. First, for that I will, so when you are using any rotating tool, we are having the rotate tool and rotating rectangle tool. आपको प्लेन, जैसे आप प्लेन चेंज करोगे, अभी देखो this color, this blue color and this blue color matches, because जो भी तुम ऑब्जेक्ट रोटेट करोगे it will rotate along this blue axis. तो ये टॉप, ये सरफेस पे आपको ब्लू एक्सिस मिलेगा, ये सरफेस पे ग्रीन मिलेगा और ये सरफेस पे रेड मिलेगा. तो अभी व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क फर्स्ट पॉइंट, आई विल मार्क देन सेकंड पॉइंट, एंड देन I will lift it like this. I want to know the dimension, that is 3.5. 3.5 enter. See, एक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक प्लेन बना दिया by using rotated rectangle tool, but it is at the 90 degrees. Again I will mark this point and this point, lift it again. Just observe this dimension toolbar, what I am doing. Drag it like this, don't click anywhere else. 3.5 comma 45 enter. 3.5 is the length of that rectangle and 45 is the angle, enter. So you can check the angles also. Here you can select the protractor tool. In the protractor, just mark this side and mark second side. Observe the angle of that angle between these two lines in dimension bar or measurement bar. This is 45 degrees here. See, it is just for the check. You can see the angle is 45 degrees. Again I would like to show you, because it is this command is bit difficult to use. Select this plane, sorry, select the point, this point, drag it on randomly. आप ये कर सकते हो with dimension. मैंने suppose इसका reference लिया, so you will be able to see the dotted reference line how this plane will look like after drawing. Suppose मैंने इसको raise किया और randomly यहाँ पे कुछ dimension provide कर दिया. So this way also you can draw a inclined plane. Again you can now see, when I join this, it will get converted into 3D object. This kind of concept will be helpful when you draw the roof. See, okay. So this is a rotated rectangle. Now most interesting tool is circle. Select the circle tool. When you select the circle tool, the by default selected point is midpoint or center point of the circle. Just click on the screen anywhere you want to click and just drag it like this and just make a second click. It will give you a circle of radius 26.5 meter.
मैंने रैंडमली क्लिक किया था, आप जितना क्लिक करोगे उतना आपको क्या मिलेगा, उसका डायमेंशन मिलेगा। तो अभी ये 26.5 मीटर रेडियस का सर्कल है, बट इफ यू सी हियर द एजेस आर शार्प और इसमें स्मूथनेस नहीं है। इफ आई वांट टू इंक्रीज द स्मूथनेस ऑफ द सर्कल, व्हाट आई विल डू, I will select the circle. First, I will show you how to draw a circle of 5 radius, 5 meter radius. Just make a point, 5 enter. आपको क्या करना है, 5 टाइप करके enter दबाना है. That will give you the circle of radius 5. तो dimensions में जाओ, diameter 10, that means radius is 5. Tape measurement से करना है, select this, see the dimension is 5 meter. Now I want to increase the smoothness of circle, then what I will do, select this circle command, make one point on the screen, drag it like this and simply press. Suppose I want to increase the smoothness by providing the 50 sides to the circle, so I will press simply 50, then S. Just observe this dimension bar, 50 S, enter, and put the radius, that is 5 meter. Now see, the smoothness of this circle is improved or better than the previous circle. These are having the sharp edges. This circle is having sharp edges and this one is more smoother than previous one. Now if I want to increase the sides, again what I will do, mark one point on the screen, 100 S, enter, then 5 enter. See the difference. This is more smoother than previous one. See. And in by default, I don't know how many sides are there, but that is little bit sharper than whatever we provide. Now this way I can use the circle command. Now suppose I want to make a hexagon, octagon or pentagon by using this circle command itself. What I will do, mark one point on the screen, then simply press 5S, enter. So it will get converted into pentagon. Now what I will do, 5 enter. So this is the radius or the pentagon of radius 5. Again I can do the same thing, select this, mark a point on the screen, 6S, enter, 5 enter. So this is the hexagon of radius 5. Again, to draw different polygons, they have separately provided the command called polygon. It is the same thing. If you want to change, by default it is in hexagon mode, but if you want to change that, or if you want to change the sides, you can change it, 8S, enter, then 5 enter. इसमें कुछ डाउट है? हेलो, सर्कल एंड पॉलीगॉन में कुछ डाउट है क्या? No, sir. No, नो sir. सर। ओके, तो वर्टिकल डायरेक्शन बनाना रहेगा तो कैसे होगा? क्या 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 बोल रहे हो? हेलो, लाइक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुआ ना, हाँ अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये तुमको मतलब सर्कल। समझ गया, वर्टिकल प्लेन में बनाना है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ तो वर्टिकल प्लेन में बनाने के लिए यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ लाइन, और जो पहले से बना हुआ है, अभी ये देखो यहाँ पे मैं रेफरेंस लूंगा तो ग्रीन एक्सिस भी बता रहा है, रेड भी बता रहा है, तो आई कैन सिलेक्ट दिस एंड ड्रॉ इट लाइक दिस। समझ गए? हाँ सर। बन गया। सो एक रेफरेंस लाइन होगा, दैट विल बी बेटर। ओके सर। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो रेफरेंस लाइन रहेगा तो तुम शिफ्ट कर सकते हो प्लेन्स। ठीक है, सर अगर रेफरेंस लाइन नहीं रहे तो? रेफरेंस लाइन नहीं रहेगा तो देर इज ओनली वन ऑप्शन, वो तुमको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम हियर टूलबार ऑप्शन यू हैव टू अनेबल द व्यू टूलबार। अभी यहाँ पे हाँ व्यूज, तो फ्रॉम व्यू टूलबार यू हैव टू चेंज द कैमरा एंगल और यू हैव टू चेंज द व्यू।
तो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखोगे दैट इज बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कॉल्ड आईएसओ, जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है अपना, जिसमें हम लोग काम करते हैं। अभी जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक व्यू। सो फ्रॉम दैट यू कैन शिफ्ट टू अनदर व्यू। ये देखो अभी टॉप व्यू दिख रहा है अपने को। तो अगर मुझे क्या करना है, वर्टिकल इसमें बनाना है, सो आई विल सिलेक्ट द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू सिलेक्ट किया, कमांड लिया, देखो बन गया क्या? यस हाँ तो Yes, जस्ट, sir. हाँ जस्ट यू हैव टू चेंज द व्यू बाय यूजिंग द व्यू टूल बार। अभी मैंने ये सपोज साइड व्यू लिया, तो साइड व्यू लेके मुझे क्या करना है, जस्ट ये देखो वर्टिकल प्लेन में मैं बना पा रहा हूँ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मुझे जो प्लेन दिख रहा है दैट इज साइड व्यू, करेक्ट? ओके, सो दिस इज इट। सो इसके साथ ही आपको व्यू कमांड का भी यूज समझ में आया, ये व्यू टूलबार का भी यूज समझ में आया। सो नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मूविंग फर्दर, we have completed circle, then polygon. Now we'll go to the arc. Here we are having 2 point arc, or also it is called as the quarter arc. So we will select this. For that we need to select one point. Select the point. Here you need to mention the length. यहाँ पे आपको दिखेगा you need to mention the length of the arc. Suppose मैं डाल दूँ 2.5, enter, and then drag, और you need to mark the angle. तो मैं सपोज 90 डिग्री डाल देता हूँ। सो दिस इज द आर्क ऑफ एंगल 90 डिग्रीज एंड द लेंथ ऑफ 2.5 मीटर। या बाहर भी कर सकते हैं हम लोग। ये एक पॉइंट ये किया, दूसरा ड्रैग करके हम लोग डायरेक्टली, और ड्रैग हाउ वी विल गेस दैट आर्क इज परफेक्टली 90 डिग्री। Here I am able to see the red dotted line that indicates that the line which I have drawn, or the reference line which I have drawn, it is parallel to red axis. Then I will drag it up to green axis, so it will give me the angle of perfect 90 degrees. So if I use the pencil tool or line tool, so you can see, or I check the angle between these, it is perfectly 90 degrees. You can check here now. So this is how you can use the arc, 2 point arc. Next part is uh, 2 point sorry 2 point arc. So it will give you, just a moment, select first point, select second point, and drag it like this, or provide the radius or bulge. bulge मतलब आपको कितना उसको ये करना है, हाइट देना है या फिर फैलाना है, या फिर वो कर्व कितना आपको रखना है, इट इज अप टू यू। सपोज 2.5 मीटर वर्टिकल एक्सिस पे दे दिया मैंने, देन व्हाट आई कैन डू, यूज द पुश पुल टूल एंड पुल इट टिल दिस रेफरेंस। देखो अभी कैसे कन्वर्ट हो गया। अभी इसको सपोज कॉलम में बनाना है, सो आई विल यूज इट लाइक दिस। सपोज अभी यहाँ से मुझे कुछ चेंजेस लाने ड्राइंग में, सो आई कैन यूज दिस। गॉट इट? तो ऐसे आप लोग कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बाय वेरी यूज़र फ्रेंडली मैनर। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किया। आई वांट दिस इन हॉरिजॉन्टल मोड, सो आई विल ड्रैग इट ऑन द ग्रीन एक्सिस, 2.5, एंटर। ना अभी देखो, सिलेक्ट द पुश पुल टूल, सिलेक्ट दिस प्लेन एंड ड्रैग इट अप टू दिस पॉइंट। समझ गए? गॉट इट? यस Okay, Yes, sir. this way we can use the 2 point arc, or this will be like a diameter arc. Next 3 point arc. So 3 point arc ज़्यादा कुछ यूज में नहीं आता, but then also we need to learn. Mark the first point, second point, and then third point. First point, second point, and third point. This way you can use 3 point arc. ये कुछ ज़्यादा यूज का नहीं है. Now I would like to highlight the basic difference between arc and pi. So this command is called as a pi. When you use any of the arc out of this by default will give you the lines only, or this arc is made up of lines only. There is no plane. But when you use pi command, see,
बाय डिफॉल्ट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लेन्स। समझ गए? ये डिफरेंस है। अभी मैंने ये कैसे बनाया था, प्रीवियस पार्ट लाइन कमांड लेके इसको ज्वाइन किया था, देन ओनली इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू प्लेन। तो पाई का डिफरेंस क्या है, पाई में वो बाय डिफॉल्ट अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। सी, दैट इज द डिफरेंस। Okay, now I want to erase this. You can erase it like this, or you can simply select the selection tool, drag it and select this and delete it. Control Z दबाओगे तो that by default setting which works in window, that is called undo. So undo करके तुम लोग क्या कर सकते हो, control Y is for redo and control Z is for undo, same. So this way we have completed the drawing toolbar. Is there any difficulties in drawing toolbar? Then let me know. Hello. No, sir. Okay. No, sir. Okay. Let's go with the second thing. This one is called as a edit toolbar. These two toolbars we use the most while using Google SketchUp or by learning Google SketchUp. Now, once again, I would like to draw a room of 5 by 7 or 7,5 enter. ये क्या है, एक रूम है, कंसिडर दिस एज अ रूम, और प्लान है। अगर टॉप व्यू से हम लोग देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लान, ऐसे हम लोग देखें तो। नाउ देयर इज अ कमांड कॉल्ड द ऑफसेट। ये ऑफसेट हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट दिस प्लेन, यू कैन से व्हेन आई drag my cursor on this rectangle, automatically the plane is getting selected और वो वैसे दिखना चालू हो जाता है। now click on this and drag the offset outside of this rectangle or inside of this rectangle. Now any one of you, those who have not completed the internship program, please tell me what is the thickness of wall. एक्सटर्नल वॉल का थिकनेस हम लोग कितना लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में? सर 0.9. 0.5 अरे 0.9, 1 मीटर का थिकनेस देगा क्या वॉल? 0.3. 0.3, 300 mm. 0.3 और 0.3. 0.23। हाँ, यस, 23 विल बी। Sir, outer wall 0.23. का 300. ओके ओके, गॉट इट। Outer wall का 300 mm होता है. ओके ओके ओके, आउटर वॉल 0.3 इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं। इन आरसीसी स्ट्रक्चर वी कंसिडर इज एट 0.23 फॉर this type of work, or just for the drawing purpose we will select 0.3 now. So क्या करना है तुमको, ऑफसेट कमांड सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, एंड देन 0.3 एंटर, कीबोर्ड पे 0.3 करके एंटर करना है। Now if you want to repeat this command again and again, what you need to do, select this and double click, double click, double click, double click. This way it will be get repeated. Understood? Now I will control Z this, and I would like to show you how I will convert this plane into 3D room. Select the push pull tool, select this line and drag it on the vertical axis, and just put the dimensions or the height of the structure, that is 3 meter, 3 enter. See what I have done, I have converted simple rectangle into a room with wall thickness. Okay, now I would like to show you how to draw a door to this particular room for the entrance. For that, the power of tape measurement tool is it will help you to measure the dimension. With that, it will also help you to provide the reference line in your drawing. So when I select this, I will drag, I will select this line. If you select the line, then it will give you reference line. If you select the point, it will give you reference point. This is very important. Select this line, drag it on the blue axis, you will get the dotted reference line. Now height of door, कितने लोग को पता है height of door? कितना है height of door? 2.1 meter. 2.1 enter. So from this, ये लाइन से डोर का रेफरेंस लाइन मैंने ले लिया। अभी एक रैंडमली मैं कॉर्नर में क्या करता हूँ, रेफरेंस लाइन पहले बना लेता हूँ। नाउ
the width of my entrance door is 1.2 meter. So मैंने ये क्या बना लिया, reference lines बना लिया. Now I will select this rectangle tool, mark this point and mark this point. So you can see this is the rectangle, or how I have drawn it by using this reference line. Now there is no need of this reference line, so I am removing it out. See, again select the push pull tool. Here is the magic is going to happen. Select this push pull tool, select this plane and drag it back slowly till the message appears on the screen. See, now what I have done, I have make a notch for the door. This is the entry point, or this is the notch for door. Okay, so I can select this plane and delete also. Then see, understood? Is there any difficulties or is any problem? इतना समझ गए तुम लोग? Yes, sir. जिन लोगों का Yes, नहीं sir. हुआ है या फिर Yes, sir. yes, I Yes, am sir. expecting replies from direct second year students and the student those who have not participated interior design internship program. बाकी लोग को तो इतना बेसिक पता है, just they want to learn the advanced level of it. That will be on I think third or fourth day. ठीक है, just a moment. Okay, now we'll make a window in a similar manner. Anybody, I want some volunteer, or I need some help how I will draw the window. Anybody, please help me Decide the out. I seal height. Okay, sill height, I will drag it. What is the sill height? 0.9 zero point 0.9, 0.9, enter. Okay, this is the sill height. Now what I will do next? reference Uh, लेंगे 1.2. reference till the door height. Yeah, correct. I have marked the reference. Now what is the next? I want a vertical reference line also, no? Hmm. How I will get that? First I will mark the reference line at the midpoint of this line. Then I will uh, select the selection tool again. See what I did here. I have selected this point, so it has given me the reference of this point only, not a reference line. I wanted a reference line. ठीक है, no problem. Select the tape measurement tool, select this line and drag it on red axis 0.5, sorry 0.6, enter. Then again drag it 0.6, enter. If I want to increase the dimension, I can do that by suppose 1 meter, और यहाँ पे मुझे क्या करना है 1 meter. So I will get the perfect rectangle over here of reference line. Draw it like this. Select the push pull tool and drag it back till the message appears on the screen on face. ऑन फेस आएगा तभी ये आपका डिडक्ट होगा. इधर क्या हो जाएगा, ये प्लेन को आप पीछे ढकेलोगे, इट विल अपीयर इनसाइड लाइक दिस. तो ये नहीं करना है. व्हाट यू नीड टू डू, ड्रैग इट टिल, क्योंकि आप ये वाला फेस जो है, ये वाले फेस को ड्रैग करके ये वाले फेस में से डिडक्ट कर रहे हो. तो होता क्या है, जब वो प्लेन पे परफेक्टली जाएगा तो ऑन फेस करके मैसेज अपीयर होगा. अगर एक कोई इनविजिबल प्लेन ड्राइंग का ओवरलैपिंग होने की वजह से वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा तो आपको दिक्कत आ सकता है. सपोज इसके बीच में कोई एक प्लेन होगा जो आपको नहीं दिख रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है. या फिर दो लाइंस ओवरराइट हुआ है या कोई इशू, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है. नाउ सिंपली आई वांट टू ड्रॉ अ विंडो इनसाइड. व्हाट आई विल डू, तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, I will draw one line. Select the line command. Mark the midpoint. This is the indication of midpoint. When you drag or you drag a cursor on this line, it will appear in blue color. That is called as a midpoint, or
This blue dot is called as a midpoint. Like this I will draw. And again draw it like this. Okay, अभी ये क्या हुआ, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक प्लेन में. What I will do, I will take the push pull tool, just provide a random thickness currently, then again I will take the offset tool, or better way what I will do here, in a previous plane I will select the offset. Suppose I want some 0.05, enter. I have provided the offset. Select the selection tool and delete this part. See, now what I will do, select this push pull tool, select this part and 0.05, enter. So you can see what I have done. I have prepared one frame. To close that frame, what we can do, select this and select this, so it will get converted into plane. See, this way we can make a window. Now we have another option is called as the material. From the materials we can provide the glass material over here, which is transparent. You can provide the different colors to that glass, or you can adjust the transparency also, that I will show you immediately, so you will get the better idea of it. Just for that you need to enable the default tree, go to the materials option, select the material called glass and mirror. So I will select this glass, suppose. To edit this material, here you are having the option, select any material. First you need to select any material, so I select this blue. Once you select this, you have to go to this edit material. Here you can increase or decrease the opacity, so I increase decrease opacity and apply. Now you can see the view of inside also. दिख रहा है अभी? Yes, sir. हाँ, तो ये ऐसे करके आप लोग उसका क्या कर सकते हो, opacity कम ज़्यादा कर सकते हो. So this way you can design the windows. Same same thing with the door. You can draw a door, and from the materials you can provide the material of wood. Here just you need to select the wood, and then here you are having the different options for the wood also. अभी wood वो door बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you need to close this plane, double click on this, right click, or better way, double click, copy and paste it outside. क्या करना है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड डिलीट दिस प्लेन अगेन. दिख रहा है अभी, ये प्लेन को मैंने बाहर ले लिया. Yes, sir. Now again, most important thing while using Google SketchUp, when you single click on a particular object, it will select the plane only. ये जो प्लेन को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे क्लिक करो तो प्लेन सिलेक्ट कर रहा है. इफ यू डबल क्लिक ऑन दिस, इट विल सिलेक्ट द प्लेन एंड लाइंस ऑल्सो. जो ऑब्जेक्ट है उसका प्लेन एंड लाइंस दोनों सिलेक्ट करेगा. डबल क्लिक ऑन इट, इट विल सिलेक्ट द प्लेन एंड लाइंस ऑल्सो. But when you triple click on any object, it will select the entire object with the object which is connected with it. So अभी इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ. मैं इसको कनेक्ट कर लूँ लाइन से, so what will happen if I triple click on it, it will automatically select the object which are connected with it, with this object. Okay, understood? तो ये डिफरेंस है डबल क्लिक का और ट्रिपल क्लिक का. अगर तुम खाली ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो तुमको, अभी तो ये सिंगल प्लेन है इसलिए ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, बट if you want to select the entire object, so it will become difficult by only single clicking. So currently I will remove this out. अभी क्या करना है, select the push pull tool, then provide the thickness of 0.05, enter. तो ये मैंने एक डोर पैनल की तरह बना लिया है. बाकी की चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ. अभी मैंने ये सिंगल सिलेक्शन में इट इज़ पॉसिबल टू मूव. जस्ट मैं अभी दिखा रहा हूँ, बाद में तुम लोग कर सकोगे जब अपना ये पार्ट कंप्लीट होगा टुमारो.
दिख रहा है वुडन टेक्सचर अभी? Yes, sir. I will select it like this and place it over here. बन गया डोर. अभी ये बाहर के साइड में खुल रहा है. You can change it also. Okay, let it be. We'll do it afterwards. So this way you can draw one room, door and window, door notch and window. Door का मैं बाद में बता दूंगा आपको. Now what I will do, I will draw a roof, a simple roof to this drawing by using the pencil tool or using this line tool. Just provide the height of suppose 1.5 meter, then join this. See, then select the eraser tool, erase this unwanted line, and then simply select the push pull tool and drag it to this. Now there is a difference. You can see when I drag this to this end, the whole entire plane or this portion, roof portion, got converted into gray color, and other drawing is present in white color, and this plane, the by default drawn plane, has also disappeared. So just observe this dimension bar. When I will drag the cursor, just observe this dimension bar. I will select the push pull tool, select this plane and drag it. The value of drag is -7. Whenever your value is in minus, automatically the color of plane will appear in gray. इसको change करने के लिए what I will do, select this, press and hold control button and drag it. तो एक जो प्लेन हमारा डिडक्ट हो रहा था, इट विल अपीयर इन ग्रे कलर, बट वो डिडक्ट नहीं होगा या फिर माइनस नहीं होगा. आई विल शो यू दैट अगेन. ड्रॉ दिस प्लेन, सिलेक्ट द पुश पुल टूल, सिलेक्ट द ग्रे साइड से ड्रैग करोगे, द वैल्यू विल बी इन माइनस. टू कन्वर्ट दैट इनटू प्लस, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल बटन एंड देन ड्रैग इट. अभी एक प्लेन क्या है हमारा ग्रे कलर में, उसको कैसे कन्वर्ट करें? सिलेक्ट द सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट दिस प्लेन, राइट क्लिक, देर इज अ ऑप्शन कॉल्ड रिवर्स फेसेस, सिलेक्ट दिस. तो जो ग्रे पोर्शन था वो अंदर चला गया और बाहर में क्या है अपना वाइट पोर्शन. सो योर ड्राइंग शुड अपीयर लाइक दिस. अभी ये जो रूफ है दैट इज जस्ट अ प्लेन, नॉट द प्रॉपर रूफ ऑफ पर्टिकुलर थिकनेस. तो अभी हमें क्या करना है, इसको थिकनेस प्रोवाइड करना है. सिलेक्ट पुश पुल टूल, प्रोवाइड द थिकनेस ऑफ 0.3, एंटर. सॉरी ज़्यादा हो गया, 0.03 एंटर. ये छोटा है, ठीक है. सपोज आई विल प्रोवाइड 0.05 एंटर. देन डबल क्लिक ऑन दिस और सिंपली ड्रैग इट अगेन, 0.05 एंटर. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थिकनेस प्रोवाइड कर दिया है. नाउ सी हियर न्यू प्लेन हैज गॉट क्रिएटेड. इसको आगे ड्रैग करेंगे हम. इसको हमने ड्रैग किया, 0.3 एंटर. यहाँ पे भी हमने ड्रैग किया, 0.3 एंटर. नाउ सी यहाँ पे कुछ मिसमैच है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट द लाइन कमांड, draw this point, drag it like this, so it will, the same angle will appear in pink color. Extend it, select this line, select this line, extend it, then go to this eraser tool and erase the unwanted parts. ये भी इसको नहीं, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट. फिर क्या करना है हमको, अगेन सिलेक्ट द पुश पुल टूल, सिलेक्ट दिस प्लेन, press and hold the control button for the positive value and place it like this. Now select the eraser tool, erase these unwanted lines, erase this line. See here, erase these lines. So now our roof is ready. Roof for the house is ready. If you want to do something else, you can also do that. Now what I will do,
I will go to this material option. In the materials, I am having the roofing. So in the roofing, you can select the different textures, double click on it and apply it like this. See. So these are different roofing options. You have to apply this color or this texture to each and every face of this roof. Understood? Any difficulties? Hello? No, sir. No, sir. Okay, direct second year student, any problem, any difficulties? No, sir. Okay, No, sir. ठीक है, मतलब इतना तुम लोग समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now again, what I will do, select the pencil tool. What is the trade? Staircase का trade कितना होता है? 0.23. 0.25. Rise कितना होता है? 0.15. 0.17. Okay, 15 or 17. Again, I will draw 0.125. Then again 0.15. Enter. Again 0.25. Enter. 0.15. Enter. ठीक है. Now I will drag it up to this and close it. Then select the push pull tool and make the staircase like this. Okay, got it? खाली अभी क्या है, इसके नीचे जो प्लिंथ होना चाहिए, that plinth is not available. How I am going to cover that? There is one more tool in edit toolbar that is called as follow me tool. Select this follow me tool, select a particular plane which you want to convert by using the follow me tool. Select this plane, just drag it like this with the reference of outer lines. I'm again dragging it with the reference of outer line, again like this. So if you want to do the same, or if you want to do the way I'm doing it, you have to use the orbit tool by pressing and holding this mouse scroller. Just simply close it over here. Now you can see हो गया इसका प्लिंथ कन्वर्ट. नीचे से ये रहेगा, hollow रहेगा. To close that, draw one plane like this or draw one line like this. Select this line toolbar and erase these lines. But from the bottom it will disappear, but inside it will damage some parts of your drawing. I will remove these lines also. See, done. Got it? Any difficulties? सर अगर सिर्फ स्टेयरकेस रखना है और बाकी का पूरा ये स्टेप्स हटाना है तो मतलब सिर्फ स्टेयर केस रखना है, तो पहले स्टेयर केस जो ड्रॉ किया था वही मोड में था ना? हाँ सर नहीं जो सर अभी स्टेप्स आए ना हाँ, उसको ये अगर प्लेन में कन्वर्ट करना है तो लाइंस में खाली सिंगल प्लिंथ, खाली प्लिंथ रखना है तुमको. हाँ सर हाँ, अभी इसको क्या करोगे? सिंपल ये रेफरेंस लाइन लो इसका, या फिर इसको ड्रैग करो. या बेटर वे तुम ऐसा भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड करो, सिलेक्ट द पुश पुल टूल, इसको नीचे ड्रैग करो. हो गया? यही बोल रहे थे ना? यस सर हाँ हाँ, सर हाँ तो ऐसा ड्रैग करके भी कर सकते हो. देन व्हाट यू डू, सिलेक्ट दिस line or these points diagonally and close this, so it will match the same level. Understood? यस सर Okay, और कुछ डाउट है? नो सर Okay, so what we have seen the push pull tool from edit toolbar, follow me tool, then we have seen the offset tool. Now next tool is rotate tool. To use rotate tool,
select this selection tool. Now if I want to select this entire object, how much click I need to make? Hello. 3. Triple click on this, so the entire object will get selected. So I will select the rotate tool. रोटेट में भी आपको कैसे रोटेट करना है, इट इज डिपेंडेंट. सपोज आई वांट टू रोटेट अलोंग द ब्लू एक्सिस, सो आई विल select the topmost face. If I want to rotate along the green axis, so I will select this face, or red पे करना है तो red axis, so I will select this. Take the reference line, drag this on the red axis, take the reference line, make a click, and then rotate it by the angle which you want to rotate. Here you can mark the angle also, or you can drag it as per your choice with the help of reference axis. तो ये ऐसे रोटेट कर लो. सपोज ये ग्रीन एक्सिस पे रोटेट करना है, ये ड्रैग करो, रेफरेंस लो, ऐसे रोटेट करो. समझ गए? एनी डिफिकल्टीज? अभी ये तुम लोग करोगे तब तुमको पता चलेगा. रोटेट में थोड़ा दिक्कत आता है इनिशियल लेवल में, और जब करोगे तब समझ में आएगा. So next point in this, or the next tool in this edit toolbar is scale. For that also I have to select one object, triple click on it, then select the scale option. So it will give you the different option by which you can increase or decrease the dimension of this entire block. So if I want to increase the height, I will select this point. If I want to increase the length, I will select this point. If I want to do it diagonally or change the dimensions diagonally, I can change this. Just it will decrease, this dimension will decrease from one side only if I do it as it is. But if I press and hold the control button, the dimension will decrease from the both the points. दोनों साइड से कम ज़्यादा हो रहा है. देखो अब ये अभी एक साइड से हो रहा है. इफ आई प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल बटन, the dimension will decrease equally from both the sides. अभी ये भी करना है तो दोनों साइड से कम ज़्यादा हो रहा है. अगर मैं एक ही पॉइंट खींचूँ तो ये एक पॉइंट से हो रहा है. दोनों साइड से करना है, यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल बटन. गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एज द स्केल. और स्केल में और एक पॉइंट है, इफ आई वांट टू चेंज और इफ आई वांट टू रिड्यूस द डायमेंशन or by half, so what I will do, I will drag it like this, और सिंपली वैल्यू 0.5 एंटर करना है तो क्या हो जाएगा, उसका स्केल हाफ हो जाएगा. टू मेजर दैट एक डायमेंशन टूल सिलेक्ट करो. ये वाला डायमेंशन हम लोग मार्क करते हैं, दैट इज 1.98. देन अगेन आई विल मेक अ ट्रिपल क्लिक, देन गो टू द स्केल ऑप्शन, सिलेक्ट दिस 0.5 एंटर. देखो 1.98 था, नाउ इट इज 0.99, हाफ डायमेंशन हो गया उसका. डबल करना है तो अगेन ड्रैग दिस एंड मार्क 2 एंटर. तो अभी देखो वापस वही मोड में आया. इसका डबल करना है तो 2 एंटर. चेक द डायमेंशंस. तो ऐसे हम लोग इसको कम ज़्यादा स्केल कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्केल कमांड. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मूव कमांड. Just today we will see the simple use of it, and today we will learn this in advance. If you want to move any object from particular point, you can move it like this. Simply what you need to do, select one corner or one point, then drag it on any of the axis or drag it randomly and place it on your desired place. But if you do it like this, or you use the move command like this, there is one drawback. Now what I did, I have moved this block from original place and place it over here with attaching the this cube. Now again I want to move this this object from its original position to another position. So what is happening, these two planes get attached with each other, and when I move this block, the another block's dimensions are also getting damaged. So for that we have to use different options that I am going to explain you tomorrow. Now till this moment, any difficulties? No, sir. No, sir. No, sir.
Okay, direct second year students, नो No, सर. sir. easy लग रहा है तुमको? यस सर. Okay, Yes. any change you guys want from tomorrow? स्पीड में मतलब ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं या ज़्यादा स्लो जा रहे हैं? एनी चेंज डू यू वांट? नहीं सही है सर. नहीं sir, सर, बराबर. ऊपर है सर. ओके, सो आज तुम लोगों का टास्क ये रहेगा, आई विल क्रिएट वन गूगल ड्राइव. जस्ट यू गाइज नीड टू draw the house like this or small block like this by using dimensions of 5 by 7 and height is 3 meter. डायमेंशन क्या रहेगा? 5 by 7 एंड डायमेंशन 3 मीटर. कैसे भी बनाओ, जस्ट आई वांट दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ड्राइंग ऑन गूगल ड्राइव. मैं तुमको एक गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा अभी. यू कैन प्रोवाइड द डिफरेंट टेक्सचर टू दिस, क्योंकि कॉपी नहीं करना है. यू हैव टू upload this with the names of your group members or roll numbers of your group members on this. तो वो तो तुम लोग बाद में कर सकते हो, या फिर you can use text options from here also. तो यहाँ पे तुमको simply तुम्हारे नाम जैसे अभी तुम लोग ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर you can use the 3D text also. just a moment. तो 3D text में तुमको क्या करना है? रोल नंबर, जो भी तुम्हारा रोल नंबर रहेगा, सपोज 1 है तो प्लीज, तो ये एक 3D टेक्स्ट बन जाएगा. जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द रोटेट टूल, सिलेक्ट दिस प्लेन, रोटेट इट लाइक दिस. तो जब भी तुम लोग तुम्हारा सबमिशन का काम करोगे, यू हैव टू प्लेस इट समवेयर, या फिर यू कैन मूव इट एंड प्लेस इट ऑन वॉल ऑल्सो. तो ये विजिबल रहेगा. तो ये आज का तुम्हारा बेसिक टास्क है. जो लोगों को नहीं आ रहा है वो लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाइल डूइंग दिस ऑल्सो यू विल फेस सम डिफिकल्टीज. तो एक बार ये कवर हो जाए तो फिर कल हम लोग इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे. हाउ यू कैन इंक्रीज द स्पीड, हाउ यू कैन यूज मल्टीपल ऑप्शंस बाय वाइल यूजिंग सिंगल कमांड. जैसे अभी मूव कमांड हम लोगों ने देखा, तो मूव कमांड यूज करते वक्त ही हम लोग कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं. और फिर जैसे मूव कमांड यूज कर कॉपी कर सकते हो विथ बाय कन्वर्टिंग दैट ऑब्जेक्ट इनटू कंपोनेंट और मेकिंग अ ग्रुप. जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वी कैन रिमूव आउट और वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द ग्रुप कमांड और कंपोनेंट कमांड. अभी उसमें भी और डिटेल है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो. ये कर सकते हो ना तुम लोग? हेलो? यस सर. Yes sir. Okay, just try to maintain the creativity, or want to highlight one more thing. Here you are having one more option called as paint bucket. जो मटेरियल हम लोग यहाँ से पुट कर रहे थे, वही मटेरियल यहाँ से आता है ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एज पेंट बकेट. So here also you can use the color options. Select this, go to the colors. So here you will see different colors. So this way you can apply colors to your house from outside. You can also apply the colors from inside. यहाँ पे तुम लोग दे सकते हो, but it will become difficult. तो ये पार्ट मैं कल तुमको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आता है. अंदर का पार्ट पूरा विजिबल हो तो क्या करना है. जस्ट एडिशनल टिप आई वांट टू गिव यू. व्हेन यू आर ड्राइंग और तुमको ये व्यू कम पड़ रहा है या फिर तुमको ज़्यादा व्यू चाहिए, सो बाय डिफॉल्ट द एंगल for the view is, or viewing angle is 35 degrees. If you want to increase the angle, just select the zoom. You can see the by default angle is 35 degrees. You can increase that angle 50, enter. तो देखो अभी viewing angle मेरा बढ़ गया. और बढ़ाना है so I will put 70, enter. So wide angle view हमको मिल जाता है. So you can work in this manner. तो देखो अभी, और by default 35 degrees में तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है. When I increase the angle, तो मुझे ज़्यादा व्यू कैप्चर करना पॉसिबल हो रहा है. ठीक है. बट व्हाट हैपन व्हेन आई चेंज द एंगल
the perspective view of that drawing will get changed, because in perspective you will be able to see the straight lines. These lines parallel to other lines, or sorry, in ISO you will be able to lines parallel to each other, but here what is happening, the view is getting changed, so planes are not looking as per its orientation, और जैसे दिखना चाहिए वैसे नहीं दिख रहा है. ठीक है, खाली तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा रोल नंबर और नाम यहाँ पे डाल के ACA ACB, द क्लासरूम विल बी डिफरेंट. ACA का अलग रहेगा, ACB का अलग रहेगा. Whatever the task will be given to you today is having suppose 5-10 marks something else, और इसका सबमिशन आपको करना है ग्रुप वाइज. तो जो इंटर्नशिप वाले बच्चे थे उनका ग्रुप ऑलरेडी था ना? हेलो. Yes, sir. हाँ, तो वो सेम ग्रुप आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. जस्ट दिस टाइम यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 10, और ये लिस्ट मुझे चाहिए. CRs ACA और ACB का CR है इसमें? यस सर. हाँ, आप दोनों को क्या देना है, टिल टुमारो मॉर्निंग और टुमारो इवनिंग आई वांट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद द ग्रुप नंबर्स. तो आइदर यू गो विद द प्रीवियस ग्रुप्स, और आइदर मेक अ ग्रुप फ्रॉम 1 to 10, 11 to 20, ऐसे आपको ग्रुप जो फिजिबल रहे वो बनाओ. खाली 10 बच्चों का एक ग्रुप चाहिए. 5 कर सकते हैं, बट the time which we are having, that 5 days, it will not be enough to complete the presentations for the group of 5. तो क्या करना है, 10-10 मेंबर्स का ग्रुप बनाओ. ये टास्क तुम लोग ग्रुप में करो, और 10 के ग्रुप में एटलीस्ट 3 मेंबर्स के पास तो पीसी होना चाहिए, पीसी एंड इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर टू कंप्लीट द वर्क. ओके, हेलो. Okay, sir. और कोई ओके डिफिकल्टी सर. है? डिप्लोमा स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स में, अभी जो सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उनके पास, सबके पास पीसी लैपटॉप है? यस सर. Yes, यस sir. सर. मैंने ये बताया कि तुमको कैसे डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर? नो सर. नो सर. सर. नो. नहीं सर. Now what you need to do, just go to your browser. गूगल सर्च में आपको क्या सर्च करना है? गूगल स्केचअप ट्रायल वर्जन. तो ये गूगल स्केचअप ट्रायल वर्जन पे सर्च करोगे, इमीडिएटली इट विल शो यू दिस. यहाँ पे जाओगे तो 30 days ट्रायल का ऑप्शन आएगा. इमीडिएटली क्लिक ऑन दिस, स्टार्ट फ्री ट्रायल. तो ये लॉगिन पूछेगा, आप लोग गूगल लॉगिन करो या कोई एक साइन अप कर लो. साइन अप करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, या फिर वेब वर्जन अवेलेबल हो जाएगा. सेकेंडली, पर्सनल प्रोजेक्ट का तुमको करना है स्टार्ट 3D मॉडलिंग. दिस इज कॉल्ड एज अ वेब वर्जन. स्टार्ट 3D मॉडलिंग जिनके पास कुछ नहीं है वो लोग यहाँ से कर सकते हैं. जस्ट अ मोमेंट. वेब वर्जन का भी बता देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत आ सकता है, सो दे कैन यूज वेब वर्जन. Start modeling. So web version looks like this. Basically it requires the stable and fast internet connection. Options are same. यहाँ पे देखो, this is the selection tool. Then here you are having eraser. This is the paint bucket option. Here you are having the line tool. जो line tool है तुम लोग select करो. Same ये work करेगा. ये rectangle बना है. Then here you can see the edit toolbar. Select the push pull tool. इसको तुम height raise कर सकते हो. ठीक है. Then again you are having the rectangle tool separately. तो ये rectangle तुम बना सकते हो. In a rectangle, here you can see arc, in rectangle you will be able to see rectangle, rotated rectangle, circle, polygon, and in lettering 3D text is also available in the same. So ये क्या है, combination है, set of combination of different tools. Or also you can save the drawing. It will be automatically get saved to the cloud और द ऑनलाइन स्टोरेज. क्लाउड तो अभी तुम लोगों को पता ही सबको. तो जो भी तुम्हारा क्लाउड और ड्राइव का ये होगा, इसमें स्केचअप में जो ईमेल एड्रेस तुमने लिंकअप किया है उसमें तुम्हारा सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो वहाँ से तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से जो फाइल तुम लोग वर्क करोगे ऑफलाइन
उसको अगर उधर खोलना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा वेब वर्जन है। टाइटल देना है तो टाइटल दे सकते हो, नहीं देना है जो तुम्हें करना है। एक्सपोर्ट करना है, देखो अभी एक्सपोर्ट तुम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट एसटीएल फाइल, पीएनजी तो तुम्हें पता है जो इमेज का ये रहता है जेपेग और पीएनजी, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पीएनजी भी यूज़ किया जाता है। पीएनजी गिव्स यू हायर डिटेल्स। एसटीएल फाइल किस लिए, थ्री डी प्रिंटिंग कितने लोगों ने सुना है? हाँ यस सर, सर। सुना है। आजकल कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, प्लास्टिक का या कुछ बनाना है तो थ्री डी प्रिंटिंग किया जाता है। तो थ्री डी प्रिंटिंग के लिए जो भी फाइल लगता है ना वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज एसटीएल फाइल। तो उसमें एक कोड कोड होता है जो दैट कोड गिव्स द डायरेक्शन टू दैट मशीन कि कहाँ से प्रिंटिंग चालू करना है, कैसे प्रिंट करना है। तो अगर कहीं इन फ्यूचर, तो ये भी एक एप्लीकेशन है इसका कि थ्री डी प्रिंटिंग में आप गूगल स्केचअप का फाइल यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग फॉर्मेट्स है, और बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जो तुम सेव करते हो दैट इज़ कॉल्ड एज एसकेपी। जो गूगल स्केचअप का फाइल सेव होता है दैट फाइल नेम इज़ कॉल्ड एज, और फॉर्मेट इज़ कॉल्ड एज एसकेपी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ प्रीवियसली जो मैंने काम किए थे वो, जस्ट अ मोमेंट, दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन? हाँ सर। हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो तुम लोग देखो डॉट एस के पी यहाँ पे दिख रहा है, डॉट एस के पी। और दो फाइल बनता है, वन इज डॉट एस के बी बनेगा, वन इज डॉट एस के पी। तो जो एस के पी फाइल रहेगा दैट इज ऑफ आर वर्क, और उसको बोलेंगे हम लोग गूगल स्केचअप फाइल। नाउ लेट्स हैव वन पोल हियर, you have to answer that question. The poll will be visible on the screen. Just answer the question. हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये गेट इनटू पीसी से भी मिल जाएगा ना? हाँ वही मैं अभी वही बताने वाला हूँ, जस्ट अ मोमेंट। नाउ देखो अभी मैंने इतना क्लियरली मेंशन किया था व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्बिट टूल। द यूज ऑफ ऑर्बिट टूल, 44% स्टूडेंट से चेंज कैमरा एंगल, दैट इज द करेक्ट आंसर, एंड अदर 28 and 36% people says rotate screen and change view. So basically whenever we use the orbit tool we change the camera angle as per our requirement. Okay, so these are the results. ठीक है। Now one more option to download the software if you don't want the trial version, or if you want the full version of this but the crack file, then there is an option called get into PC. This is the website. You visit this website because currently I am in on the college PC. I'm not going to access this website. Just go to this website. Chalo, let it be. I will go there and in search SketchUp, search for SketchUp. So यहाँ पे अलग अलग वर्जन इसके अवेलेबल है स्केचअप के, और स्पेसिफिक आपको डालना है तो स्केचअप सपोज सर आपका तो स्क्रीन 2007। स्क्रीन नहीं विजिबल दिख नहीं रहा है। है। अरे स्क्रीन हाँ, विजिबल अरे नहीं सॉरी है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। दिख रहा है अभी? ये हाँ वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, गूगल पे सर्च करो। इस इधर आने के बाद ये सर्च टैब है इनका, गूगल स्केचअप 2017 मैंने डाला है, सर्च करो। व्हेन यू सर्च ये अलग अलग आएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो वेबसाइट है ये पूरा क्रैक वर्जन देता है सबका। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगेन हाउ टू इंस्टॉल का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। दोज हु आर फेसिंग द इश्यूज, इफ़ यू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ इट, और किस पीसी पे ये रहेगा। तो 227 MB का सॉफ्टवेयर है। सेकेंडली इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ और कंपैटिबल विथ 32 बिट अल्सो एंड 64 बिट अल्सो। किसी के पास पुराना पीसी है कुछ है तो तुम लोग इसके ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो 2017। बट स्पेसिफिकली व्हेन यू डाउनलोड 2021 SketchUp you must have 64-bit PC
फॉर ट्रायल वर्जन. ठीक है. एनी डिफिकल्टीज? नो सर. आज का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो. कोई दिक्कत आएगा मेरे को कॉल करो, नहीं तो मैसेज करो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. नहीं तो वी विल डिस्कस इन टुमारोज मीटिंग. Till that, just complete your task, make your groups. CRs you have to WhatsApp me the group members roll number and group numbers, then group members name. तो ये सब कंपाइल करके मुझे भेजो एक एक्सेल शीट में. टिल टुमारो इवनिंग. टुमारो इवनिंग इज द डेडलाइन. सुबह मिल जाए तो दैट विल बी बेटर. अभी ये जो टास्क दिया है मैंने, ये इंडिविजुअली कर लो या फिर ग्रुप में 1-2-3 लोगों ने किया. जस्ट अदर्स प्लीज, दोज हु आर नॉट हैविंग पीसी, just create one Zoom meeting and the person who is going to draw that just explain this to other guys या फिर other students. And one more thing I would like to recommend, जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, आप लोगों का एक अलग ग्रुप बनाओ. बिकॉज आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है. आप अगर काम बचाने के चक्कर में ये पहले जिन्होंने किया है उनके साथ मर्ज हो जाओगे तो फिर